In its original formulation, diaspora referred to the dispersal of the Jewish people following the destruction of the First Temple. In the mid-19th century it was adopted by the Moravian Church to describe its congregation, and in the 20th century it was extended to a limited number of peoples dispersed beyond their homeland, traumatically or otherwise. However, more recently it has been applied to a wide range of migrant communities that are believed by observers to exhibit some sort of socio-cultural or political cohesion in host countries. The United Nations Populations Division estimates that around 266 million people live outside their country of origin. Some countries like Israel and Armenia have diaspora populations greater in number than their own populations. The concept of diaspora is quite broad and different disciplines tend to use it to mean different things. However, there is prevailing consensus that diaspora is a group that recognizes its separateness based on common ethnicity/nationality, lives in a host country, and maintains some kind of attachment to the home country. This attachment can be cultural or have latent or overt tendencies towards political action and a desire for engagement through active measures such as sending remittances, funding civic projects, forming groups to lobby for and using different platforms to build a constituency of support for the home country in host countries. Organized diaspora communities can also promote trade and foreign direct investment, create businesses, and spur entrepreneurship and transfer new knowledge and skills. The dynamic power of the diaspora enables them to become influencers who play a significant role as actors in international affairs. The Chinese and Indian diasporas are the best examples of economic power. The dynamic power of the diaspora enables them to become influencers. The enormous potential of the diaspora is growing rapidly, with new forms of media and communications technologies enabling them to play a transformational role as productive members of the host country and agents of change for the country of origin. Sustained engagement with the diaspora, especially towards building physical capital and productivity, helps in boosting job creation, living standards, and higher growth. The Pakistani diaspora is a national asset that should be engaged and deployed as such. Climate change offers an opportunity for harnessing this potential in sectors that will crystallize the government's strategy for attracting talent. At present, the Pakistani diaspora is not one cohesive whole. It is made up of diverse subgroups without a strategic vision of strengthening country interests. Divided, the diaspora is not likely to self-organize itself in ways that maximize its political or economic leverage, complicating engagement. But this does not mean that a positive loop cannot be created for collaboration at higher levels of policymaking through engagement with universities, large corporations, and industry bodies. A mapping of the diasporic spread, including their size and distribution around the world, can help engaging their potential impact as enablers and influencers. Channeling this vital resource for long-term strategic investment can pay rich dividends. With globalization on the rise, Pakistan should move beyond looking at its diaspora solely as a source of remittances and study the example of countries that have converted their brain drain into a brain chain that helps in the circulation of technology, capital, managerial, and institutional expertise. Deepening strategic engagement with the diaspora can advance economic links and build transnational networks for trade, investment, and innovation. This shift in perception from multicultural narratives to partners in development can open doors for wider engagement. Pakistan can use its embassies as focal agencies to attract professional diaspora talent, using an apolitical approach to initiate engagement. The new age, tech-savvy diplomats can widen engagement beyond conventional approaches to define the contours of climate diplomacy for enhanced cooperation in climate action. Diaspora clusters can make direct and indirect contributions in helping to build a resilient future for Pakistan. This can include support in advocacy, strengthening capacity, technical backstopping, sharing research inputs, and resource mobilization for building resilient infrastructure, among others. The options for creative engagement are many. With the release of the Sixth Assessment Report 2023, it is clear that the climate crisis has now become a planetary crisis.
Pakistan needs all hands on deck to cope with this existential threat. It is time to bridge fault lines and put Pakistan first. The writer is the chief executive of the Civil Society Coalition of Climate Change. Published in Dawn, March 26, 2023. Subscribe our channel. Dawn Vocabulary. youtube.com/@dawnvocabulary. इसकी असल तश्कील में तारकीन वतन ने पहले हैकल की तबाही के बाद यहूदी लोगों के फैलने का हवाला दिया। 19वीं सदी के वस्त में इसे मोरावियाई चर्च ने अपनी जमात को बयान करने के लिए अपनाया था और 20वीं सदी में इसे महदूद तादाद में लोगों तक बढ़ा दिया गया था जो अपने वतन से बाहर बिखरे हुए थे, तकलीफ दे या किसी और तरह से। ताहम हाल ही में इसका इतलाक तारकीन वतन बरादरियों की एक वसी रेंज पर किया गया है जिनके बारे में मुबस्सरीन का ख्याल है कि वो मेज़बान ममालिक में किसी किस्म की समाजी और सकाफती या सियासी हम आहंगी का मुजाहिरा करते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के पॉपुलेशन डिवीज़न का अंदाज़ा है कि तकरीबन 266 मिलियन अफराद अपने आबाई मुल्क से बाहर रहते हैं। इसराइल और आर्मीनिया जैसे कुछ ममालिक में तारकीन वतन की आबादी उनकी अपनी आबादी से ज़्यादा है। तारकीन वतन का तसव्वुर काफ़ी वसी है और मुख्तलिफ मज़ामीन इसे मुख्तलिफ चीज़ों के मानी के लिए इस्तेमाल करते हैं। ताहम इस बात पर इत्तेफाक राय पाया जाता है कि तारकीन वतन एक ऐसा ग्रुप है जो मुश्तरका नस्ल/कौमियत की बुनियाद पर अपनी अलहदगी को तस्लीम करता है, मेज़बान मुल्क में रहता है और अपने मुल्क से किसी तरह का लगाव बरकरार रखता है। यह वाबस्तगी सकाफती हो सकती है या सियासी अमल की तरफ पोशीदा और गैर वाज़ेह रुझानात हो सकती है और फ़ाल इक़दामात जैसे तरसीलात ज़र भेजने, शहरी मंसूबों की फंडिंग, मेज़बान ममालिक में अपने मुल्क के लिए हिमायत का हल्का बनाने के लिए लाबी करने के लिए ग्रुप तश्कील देने और मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करने के ज़रिए मशगूलियत की ख्वाहिश हो सकती है। मुनज़्ज़म तारकीन वतन बरादरियाँ तिजारत और बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी को फ़रोग़ दे सकती हैं, कारोबार तश्कील दे सकती हैं और एंटरप्रेन्योरशिप को फ़रोग़ दे सकती हैं और नए इल्म और महारत ओहे की मुंतकिली कर सकती है। तारकीन वतन की मुतहर्रिक ताकत उन्हें बासर बनने के काबिल बनाती है जो बैन अल-अक़वामी मामलात में किरदार अदा करते हैं। चीनी और हिंदुस्तानी तारकीन वतन इक़्तिसादी ताकत की बेहतरीन मिसालें हैं। तारकीन वतन की मुतहर्रिक ताकत उन्हें बासर बनने के काबिल बनाती है। मीडिया और मवासलाती टेक्नोलॉजियों की नई शक्लों के साथ तारकीन वतन की बेपनाह सलाहियत तेज़ी से बढ़ रही है जिससे वो मेज़बान मुल्क के पैदावारी मेंबरों और असल मुल्क के लिए तब्दीली के एजेंटों के तौर पर तब्दीली का किरदार अदा करने के काबिल हो रहे हैं। तारकीन वतन के साथ मुस्तकिल वाबस्तगी, ख़ास तौर पर जिस्मानी सरमाया और पैदावारी सलाहियत की तामीर के लिए रोज़गार की तख्लीक, मेयार ज़िंदगी और आला तरक्की को फ़रोग़ देने में मदद मिलती है। पाकिस्तानी तारकीन वतन एक कौमी असासा है जिसे इस तरह शामिल और तैनात किया जाना चाहिए। आब हुआ की तब्दीली उन शुबों में इस सलाहियत को बरूए कार लाने का मौका फराहम करती है जो बासलाहियत अफराद को राग़िब करने के लिए हुकूमत की हिकमत अमली को अमली जामा पहनाएंगी। इस वक्त पाकिस्तानी तारकीन वतन एक मुत्तहिद नहीं है। ये मुतनव्वे ज़ैली ग्रोहों पर मुश्तमिल है जिसका मुल्की मुफादात को मजबूत बनाने का स्ट्रेटेजिक विजन नहीं है। मुनक़सम तारकीन वतन अपने आप को उन तरीक़ों से मुनज़्ज़म करने का इम्कान नहीं रखते जो उसके सियासी या माशी फ़वाइद को ज़्यादा से ज़्यादा करें जिससे मसरूफ़ियात पेचीदा हों। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यूनिवर्सिटियों, बड़ी कॉरपोरेशनों और सनती इदारों के साथ राब्ते के ज़रिए पॉलिसी साजी की आला सतह पर ताउन के लिए एक मुस्बत लूप पैदा नहीं किया जा सकता है। दुनिया भर में उनके साइज़ और तक़सीम समेत डायस्पोरा फैलाव की नक्शा साजी से उनके मुमकिना असरात का अंदाज़ा लगाने में मदद मिल सकती है। इस अहम वसाइल को तवील मुद्दती स्ट्रेटेजिक सरमायाकारी के लिए इस्तेमाल करने से भरपूर मुनाफा मिल सकता है। ग्लोबलाइजेशन के उरूज के साथ पाकिस्तान को अपने तारकीन वतन को सिर्फ तरसीलात ज़र के ज़रिया के तौर पर देखने से आगे बढ़ना चाहिए और इन ममालिक की मिसाल का मुताला करना चाहिए जिन्होंने अपने ब्रेन डेरेन को ब्रेन चीन में तब्दील कर दिया है, जो टेक्नोलॉजी, सरमाए, इंतज़ामी और इदारा जाती महारत की गर्दिश में मदद करता है। तारकीन वतन के साथ तज़वीराती रवाबित को गहरा करने से इक्तिसादी रवाबित को फ़रोग़ मिल सकता है और तिजारत, सरमायाकारी और जिद्दत तराज़ी के लिए बैन अल-अक़वामी नेटवर्क्स तामीर किए जा सकते हैं।
कसीर सकाफती बयानियों से तरक्की में शराकत दारों की तरफ तस्वुर में ये तब्दीली वसीतर रवाबित के दरवाजे खोल सकती है। पाकिस्तान अपने सिफारत खानों को पेशा वर तारकीन वतन के टैलेंट को राग़िब करने के लिए फोकल एजेंसियों के तौर पर इस्तेमाल कर सकता है और मसरूफियत शुरू करने के लिए गैर सियासी नुक्ता नज़र का इस्तेमाल कर सकता है। नए दौर में टेक्नोलॉजी से वाकिफ सिफारतकार रिवायती तरीकों से बालातर होकर आबो हवा से मुताल्लिक इक़दामात में ताउन बढ़ाने के लिए मौसमियाती सिफारतकारी के खदोखाल की वजाहत कर सकते हैं। तारकीन वतन ग्रुप पाकिस्तान के लचकदार मुस्तकबिल की तामीर में बराह रास्त और बिलवास्ता किरदार अदा कर सकते हैं। इसमें वकालत, सलाहियत को मजबूत बनाने, तकनीकी बैक रोकने, तहकीकी मालूमात का इश्तराक और लचकदार बुनियादी ढांचे की तामीर के लिए वसाइल को मुतहर्रिक करने में मदद शामिल हो सकती है। तख्लीकी मशगूलियत के लिए बहुत से इख्तियारात हैं। छठी तशखीसी रिपोर्ट 2023 के इजरा के साथ ये वाज़ेह है कि आबो हवा का बहरान अब सैयारों का बहरान बन गया है। पाकिस्तान को इस खतरे से निपटने के लिए सबके हाथों की ज़रूरत है। अब वक्त आ गया है कि फॉल्ट लाइनों को दूर किया जाए और पाकिस्तान को पहले रखा जाए। मज़मून निगार सिविल सोसाइटी कोलेशन ऑफ क्लाइमेट चेंज के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं। अखज़ शदा बतारीख 26 मार्च 2023। For more videos, subscribe our channel. Dawn Vocabulary. YouTube.com/@dawnvocabulary. Like, subscribe, share and comments.